फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, ना उनको फेयर डील मिल सकती है। सो चैनल पार्टनर का जो रोल है वो काफी सालों से चला आ रहा है। वी आर इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 38 years। सो ओवरऑल चैनल पार्टनर्स का जो तरीका होता है उन्हें समझाने का, उन्हें बेनिफिट्स बताने का कि क्यों ये डेवलपर अच्छा है, कि ये प्रोजेक्ट में भले आपका पैसा थोड़ा ज्यादा लग रहा है बट ये रिलायबल है, या बहुत सारी चीजें बारीकियां जो हम अगर बोलेंगे तो वो लगेगा कि हम अपने लिए मुंह मियां मिट्टू कर रहे हैं। लेकिन जो सीपीज हैं जो उनको फैक्ट दिखाते हैं तो ये रियल टाइम है कि आप उनको एनरोल करें और हर एक का घर का सपना पूरा हो। सो और आई एम बीइंग अ एमसीएचआई कमिटी मेंबर आल्सो, वी आर ट्राइंग फॉर स्टैम्प ड्यूटी वेवर आल्सो, जो मोस्टली बहुत जल्द होना चाहिए, जो 2% या 3% पे स्टैम्प ड्यूटी फिर आ सकती है। सो ये और रियल एस्टेट गवर्नमेंट का भी जो सेंटीमेंट है वो भी रियल एस्टेट को ऊपर लाने का है। जैसे उन्होंने देखा कि पिछले साल स्टैम्प ड्यूटी हमने कम की थी तो काफी अच्छा कलेक्शन हुआ। तो लोगों को घर लेना है, सबके पास फंड है, सही उनको मार्गदर्शन चाहिए, और अगर गवर्नमेंट की साथ से सहूलियत भी मिलती है तो और सोने पे सुहागा है। जैसे उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी के लिए लास्ट टाइम किया था, इस तरफ फिर वापस वो करने वाले हैं। तो आप सबसे मेरी सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है कि डिमांड जो है रियल एस्टेट की बड़ी है और कहीं ना कहीं सही मार्गदर्शन की जरूरत है। और हमारा ये जो चेंबूर का प्रोजेक्ट है जिसकी सबसे बड़ी खूबी है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट की इतनी अच्छी है, एससीएलआर से एकदम नजदीक है, प्लस यहाँ से आप बीकेसी जाना चाहो, न्यू बॉम्बे जाना चाहो, टाउन आना चाहो, कुलाबा, नरीमन पॉइंट, तो सब जगह पहुंच सकते हो। घाटकोपर है, मुलुंड है। तो ये कनेक्टिविटी वाइज इतना अच्छा है कि आप 30 मिनट्स में थ्रू आउट कहीं भी आप पहुंच सकते हो। सो कनेक्टिविटी भी है प्रोजेक्ट की। अभी अप्रूवल्स हमारे आ चुके हैं, वर्क फुल स्विंग में है। हम गारंटी दे रहे हैं बायबैक की, रिफंड की गारंटी दे रहे हैं। हम आपको सोशल मीडिया सपोर्ट भी देंगे। आप सभी सीपीज को अपने कस्टमाइज डिजाइन बनानी है तो वैसे हमारे अंकित शाह जो है डिजाइनर क्रिएटिव एजेंसी से, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। एक शानदार सीपी लैडर्स हमने दिया है आपको, आप अगर उसमें ग्रुप में ज्वाइंट होकर काम करना चाहते हैं वैसा भी कर सकते हैं। ये બધા આપણા પ્લસ પોઈન્ટ છે આ સાઈડના, કે જે આજે ડેવલપ કરીને પેલા રાખ્યું છે. જનરલી બહુ ઓછા બિલ્ડર, 70 થી 80% બિલ્ડરો જ્યારે કામ પતી જાય છે ત્યારે આ બધું કરતા હોય છે ખરેખર. એટલે આ એક પ્લસ પોઈન્ટ મોટો છે સાઈડનો. અને કનેક્ટિવિટી આ સાઈડ માટે બહુ સારી છે બધી. બીકેસી જવા માટે સાંતાક્રુઝ લિંક રોડ આ બધી જ રીતે આ સાઈડ ઘણી સુટેબલ છે. પ્લસ તિલકનગર એક શાંત એરિયો છે, એકદમ એકદમ શાંત એરિયો કહીએ ને, જે પીસફુલ એરિયો છે. આ એરિયાનો એક પ્લસ પોઈન્ટ એ છે, આખી ગ્રીનરી તમને જોવા મળશે આખા એરિયામાં. તમે ક્યાંય પણ તિલકનગરમાં ફરશો ને તો જબરજસ્ત ગ્રીનરી જોવા મળશે. રિઝર્વેશન પ્લોટ પણ એટલા છે આ તિલકનગરમાં. એના હિસાબે શાંત વાતાવરણ. જ્યારે પણ કસ્ટમરને સવારે લઈ જાઓ, બપોરે લઈ જાઓ, કે કોઈ પણ ટાઈમે લઈ જાઓ ને તો એને પીસફુલ ફીલ થાય છે આ તિલકનગરમાં. નજીકના એરિયામાં 2 જૈન ટેમ્પલ છે, એક ખાસ ધ્યાન રાખજો. એમજી રોડ પર કુશાલ ટાવર પાસે અને નીલકંઠ વિહાર બેક સાઈડમાં. આપણી સાઈડ થી વોકિંગ ડિસ્ટન્સમાં થાય 5 થી 7 મિનિટ. આ એક પ્લસ પોઈન્ટ છે જૈન ટેમ્પલ બંને. ત્રીજી વસ્તુ, અત્યારનો માર્કેટનો સિનેરિયો ઘણો સારો છે. કોવિડ છે એટલે આપણે માનીએ છીએ, પણ ઘાટકોપર ને સાથે તિલકનગર જોડાયેલું છે. જનરલી મેન્ટાલિટી ઘાટકોપરની પબ્લિકની મેન્ટાલિટી એવી છે કે આપણે ફ્લાયઓવર ક્રોસ કરીએ પછી જ ચેમ્બુર ચાલુ થાય. એટલે તિલકનગર પાર્ટ ઓફ ધ ઘાટકોપર જ છે. અમારે લોકો જનરલી એમ ગણીએ છીએ કે તિલકનગર ને ઘાટકોપર બંને એક જ ગણાય. અને તિલકનગરની કનેક્ટિવિટીમાં રેલવે સ્ટેશનમાં હાર્બર લાઇનનું સ્ટેશન, વિદ્યાવિહાર સ્ટેશન એકદમ નજીક થાય છે. ત્યાંથી શેરે રિક્ષા પણ ચાલુ હોય છે. અને આજની તારીખમાં બજારમાં જે પ્રમાણે સિચ્યુએશન છે, આપ ટાઇટલ લઈને જો ફાસ્ટ કામ કરશો તો આપને પણ સારો રિસ્પોન્સ મળશે. ચેનલ પાર્ટનર બધા જ જોડાશે અને અમારી આખી ટીમ તમને સપોર્ટ કરશે પૂરેપૂરી. એવી હું તમને શુભકામના આપું છું 100%. Everyone now wants an extra room. They knows what is the importance of an extra room. You can make it as a children's room, you can make it as a study room or an office room. So yes, it has created a positive aspiration and positive demand in real estate, and this is what we have seen in the last quarter of 2020 and the first couple of months of 2020, where the stimulus discount was there and we reported one of the highest sale
in a decade. So this is what is the positive news for the real estate. And now, yes, talking about your project, Tilak Nagar has always been one of the options for the people staying in Ghatkopar and Chembur. The buyers who stay in Ghatkopar and want to own a bigger house has always looked into Chembur, Tilak Nagar as their first option after Ghatkopar, because the biggest positive about the Tilak Nagar as an option for the people staying in Ghatkopar and Chembur is they do not have to stretch their budget too much. They can easily afford a house in Tilak Nagar and then they easily stay close to the Ghatkopar and Chembur area because Tilak Nagar is located in between the two areas. So they do not have to strengthen their budget, but yes, at the same time, they can own a bigger house. At a budget of 2 BHK in Ghatkopar, you can easily own a 3 BHK in Tilak Nagar. So it gives an added advantage in future. You do not have to basically switch on to your new house again and again. So once you buy a 3 BHK or a bigger 2 BHK in a Tilak Nagar location, you are basically through for 10 to 15 years of your life. Some of the buildings which were constructed before the 2018 time do not have occupation certificates, but the new buildings which have been constructed now after the RERA are coming, the developers are completing the building and giving it with an occupation certificate. So this is the advantage for the upcoming buildings, which has been negative for the past buildings which have been constructed. And yes, it has lots of green area, lots of open spaces, a big garden in between, Sahyadri garden in between. So it has always been a location with good air ventilation, good planning, and yes, that's what. And wishing you best of luck. I've spoken about your project too, and they said that if it is excellent in every way, they would definitely like to invest in your project. And the rest, all of them have said about the connectivity, about the greenery. So I don't think I have to say much about the things. Just I'll hope you do the best and keep the best. S3 Group के साथ पास में काफी एक्टिविटीज की है digitally, non-digitally. We have got a very, very, very good response directly from the clients as well as CPs. आपको जो any kind of support आपको चाहिए in terms of digital creative से लेके वीडियो से लेके brochures से लेके कुछ भी, तो संघवी S3 ग्रुप की तरफ से एक एक्सटेंडेड आर्म समझ लीजिए कि आपको जो भी क्रिएटिव्स चाहिए we will be more than happy to share you so that you can share it to your clients. व्हाट्सएप क्रिएटिव्स है, व्हाट्सएप डीपी में आपको रखना है. इस पे बहुत हाईलाइट करना चाहूंगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ जो ऑफर इन्होंने दी है बाईबैक के साथ, अप्रिसिएशन, गारंटीड अप्रिसिएशन प्लस स्कीम्स वगैरह वगैरह, इट इज वेरी एक्चुअली बहुत ही बेहतर डील है आपके लिए. तो इट विल बी इजी फॉर यू गाइस टू कम्युनिकेट टू योर क्लाइंट. तो आपको हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट लगेगा तो प्लीज फील फ्री टू लेट अस नो. चंद 4 लाइनें बोलकर इसको समापन करेंगे हम लोग कि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के ऊपर जिंदगी खेलती तो उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है. जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है. दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं. कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है. तो हम आप सभी को संघर्ष करके निखरना है. इसी कामना के साथ ये मीटिंग को विराम देते हैं. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू वंस अगेन.